नमस्कार। वेलकम टू RCI नवशिखर चैनल। RCI के नवशिखर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नीता और आज का हमारा चर्चा का विषय है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड मैनेजमेंट। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड मैनेजमेंट क्या है, ये क्यों होता है और इसके क्या कारण हैं, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर RK वाधवा, जो कि CMO है सफदरजंग हॉस्पिटल के रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में। वेलकम सर, आपका हमारे RCI के नौशिखर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बट बिफोर प्रोग्रेसिंग फर्दर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म आवर व्यूअर्स कि इस रिगार्ड में आपकी कोई भी क्वेरीज है या आपके अपने कोई क्वेश्चंस हैं जो कि आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉल अस ऑन आवर टोल फ्री नंबर दैट इज़ 1800112008 एंड आवर लैंडलाइन नंबर इज़ 265111611 एंड आवर फैक्स नंबर इज़ 265111609। अगर इस रिगार्ड में आपकी कोई सजेशन है या आपके अपने कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जो कि आप हमें मेल करना चाहते हैं, तो यू कैन मेल ऑन आवर ईमेल आईडी दैट इज rehab rehab@ndc.vsnl.net.in. or if you want to know more about RCS Naushikar channel, so you can visit our website also, that is www.rehabcouncil.nic.in. तो आइए अपनी चर्चा करते हैं मैनेजमेंट ऑफ इंजरीज के बारे में अपने डॉक्टर से, अपने एक्सपर्ट से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि स्पाइन क्या है, आप हमें इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारी स्पाइन को रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। और जो सिर होता है या स्कल होती है उसमें ब्रेन होता है, और उसके नीचे स्पाइन कंटिन्यू करता है गर्दन से नीचे वाले बैक पोर्शन, लोअर बैक तक, जिसको हम कॉक्सिक्स बोलते हैं। तो स्पाइन में अलग अलग वर्टिब्रा होती हैं, अलग अलग बोन्स होती हैं। जैसे हम लोग रिंग पहनते हैं, इस शेप की होती है। तो हर वर्टिब्रा में एक हिस्सा होता है, उसको बॉडी बोलते हैं, और उसके पोस्टीरियर पार्ट्स होते हैं, और वो एक गोलाकार आकार में होती है। जैसे हमारी रिंग होती है उसमें नग होता है, ऐसे ही वर्टिब्रा होती हैं हमारी। और इन सब वर्टिब्रा को ये जुड़ी हुई होती हैं, और उस टोटल वर्टिब्रा को हम स्पाइन बोलते हैं। और इस स्पाइन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो यानी कि जैसा कि आपने बताया कि ये जो स्पाइन होती है ये बेसिकली रिंग के फॉर्म में होती है और उसके चारों तरफ रिब्स यानी वर्टिब्रास लगी हुई होती है। तो अब हमें ये बताइए कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो ये क्या चीज़ होती है। स्पाइनल कॉर्ड एक नर्वस टिश्यू है या तंत्रिकाएं हैं, और ये ब्रेन का एक हिस्सा है। ब्रेन जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है। और क्योंकि ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है शरीर का, इससे स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं हर लेवल पे, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे। तो क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव टिश्यू है, और इसको किसी तरीके से चोट ना लग जाए, इसमें इन्फेक्शन ना हो जाए, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हर व्यक्ति में स्पाइन होता है, वर्टिब्रा होती हैं जो इसको बाहरी चोटों से या इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। तो सर ये बताइए कि स्पाइन का जो फंक्शन है वो क्या होता है, इसमें चोट कैसे लगती है। स्पाइन का फंक्शन होता है स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करना। ओके। ताकि जैसे मान लिया किसी को एक्सीडेंट होता है, कोई चोट लगती है, लाठी से चोट लगती है, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट लगती है बैक में, तो वो चोट सीधा स्पाइनल कोड या नर्व्स के ऊपर नहीं लगती, वो चोट लगती है स्पाइन पर या वर्टिब्रा पर। तो जो चोट स्पाइनल कोड पर लगनी चाहिए उसको स्पाइन या वर्टिब्रा प्रोटेक्ट कर लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। तो स्पाइन या वर्टिब्रा एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कोड को, ताकि स्पाइनल कोड में किसी तरह की कोई हानि या क्षति ना पहुंचे। ओके। तो सर अब हमें ये बताइए कि जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको मैनेज कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे इसका होता है। मैनेजमेंट हम थोड़ी देर में जानेंगे। पहले हम स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड की नॉर्मल एनाटॉमी के बारे में जानते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें इम्पॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। जैसे वर्टिब्रा, मैंने जैसे बताया कि हर वर्टिब्रा एक रिंग की तरह होती है, जो
नीला वाला पोर्शन है उसको बॉडी बोलते हैं, और पीछे इसके फैसेट जॉइंट्स होते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है, और स्पाइन होता है। तो इसके पार्ट्स हैं वर्टिब्रा, स्पाइनल कॉर्ड रूट्स और स्पाइनल नर्व्स, ब्लड वेसल्स, और दो वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती है, इंटर वर्टिब्रल डिस्क, और ये पेन सेंसिटिव होती है। कई बार हमने सुना किसी व्यक्ति को कमर में दर्द है, वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको कहता है कि आपको डिस्क प्रोलैप्स है। तो ये डिस्क क्या चीज़ होती है? डिस्क एक जेल लाइक मटेरियल होता है, और दो स्पाइन जो वर्टिब्रा हैं उनके बीच में ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, और दोनों वर्टिब्रा को एक कनेक्ट करके रखता है। तो इसको इंटर वर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, मतलब दो वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क है उसको हम इंटर वर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। उसके अलावा फेसेट जॉइंट्स होते हैं, ये भी पेन सेंसिटिव है, लिगामेंट्स होते हैं, और मसल्स होती हैं। नाउ कॉमन स्पाइनल इंजरीज। स्पाइन को हम अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। जो वर्टिब्रा नेक में होती हैं उसको सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं, उनका नंबर 7 होता है हर व्यक्ति में। उसके बाद डोर्सल स्पाइन आता है या थोरेसिक स्पाइन आता है, इसमें हमारी 12 या 12 वर्टिब्रा होती हैं। उसके बाद लंबर स्पाइन होता है जिनका नंबर 5 होता है। तो लंबर स्पाइन तक जो वर्टिब्रा हैं वो अलग अलग हैं, मतलब हर वर्टिब्रा सेपरेट है, और उन दो वर्टिब्रा को डिस्क से यूनाइट होती हैं, मतलब जुड़ती हैं। तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, 12 डोर्सल वर्टिब्रा या थोरेसिक वर्टिब्रा, और 5 लंबर वर्टिब्रा। तो हमारी 24 वर्टिब्रा जो है अलग अलग होती हैं। उसके बाद सैक्रल वर्टिब्रल होती हैं, ये 5 वर्टिब्रा फ्यूज होती हैं और एक वर्टिब्रा की तरह दिखती हैं, और इनमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होता। और सैक्रम के बाद आता है कॉक्सिक्स या टेल बोन। ये डिफरेंट रीजियंस हैं स्पाइन के। नाउ सर्वाइकल स्पाइन में कौन कौन सी इंजरीज हो सकती हैं? जैसे सर्वाइकल स्पाइन में स्प्रेन हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है, डिस्क हर्निएशन हो सकता है, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं वर्टिब्रा के, स्पाइनल स्टीनोसिस हो सकता है, या कॉर्ड कॉम्प्रेशन हो सकता है, राई नेक और या टोटिकोलिस, एंड विप लैश इंजरी। विप लैश इंजरी ऐसी इंजरी है जिसमें व्यक्ति, मान लिया गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है और सडनली किसी वजह से ड्राइवर को या गाड़ी चालक को ब्रेक लगानी पड़ी, तो उसमें क्या होता है, आपका जो अपर पोर्शन है बॉडी का वो आगे किसी पार्ट से जाके टकराता है, और इसको हम विप लैश इंजरी बोलते हैं। तो सर्वाइकल स्पाइन में जो इंजरीज हैं या डिस्क प्रोलैप्स हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, और इनको जितना भी पॉसिबल हो हमें बचाव करना चाहिए। नाउ कॉमन spinal injuries in thoracic region are sprain and strain, compression fracture, and direct contusion of the spinal cord. इस चित्र में दिखाया गया है व्यक्ति कुछ आसन कर रहा है, और ये अगर ये किसी वजह से गिरता है तो इसको चोट लग सकती है। नाउ प्लेजिया मीन्स कंप्लीट लीजन। जैसे पैराप्लेजिया, अगर किसी व्यक्ति के दोनों लोअर लिम्स काम नहीं करते तो उसको हम पैराप्लेजिया बोलते हैं। पैरासिस मीन्स वन मसल स्ट्रेंथ इज प्रिजर्व्ड, मतलब कुछ मसल्स जो है वो अफेक्ट होती हैं, मतलब उनमें वीकनेस होती है, और कुछ मसल्स में वीकनेस नहीं होती, इसको पैरासिस बोलते हैं। टेट्राप्लेजिया को क्वाड्रिप्लेजिया भी बोलते हैं। इसमें मरीज को सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी होती है। पेशेंट्स कैन यूजली स्टिल मूव हिज देयर आर्म्स using the segments above the injury. For example, in C7 injury, the patient can still flex the forearms using C5 segments. Paraplegia, injury of the thoracic और lumbosacral cord और coda equina. Hemiplegia का मतलब है paralysis of one side of the body, right or left. And usually in brain injuries, for example stroke, जो हमें व्यक्ति को चोट लगती है
तो अधरंग होता है तो वो इंजरी के, ब्रेन इंजरी के अपोजिट साइड पे होता है। मान लिया किसी व्यक्ति को राइट साइड ऑफ द ब्रेन में इंजरी है, तो उसका लेफ्ट साइड पैरालिसिस होगा या वीक होगा। और अगर किसी को लेफ्ट साइड में ब्रेन में इंजरी है या चोट है, तो उसका राइट साइड जो है वो काम करेगा। नाउ यानी कि सर आपने जो ये बताया कि हम्म जो इंजरी है ब्रेन का, अगर राइट साइड में उसके प्रॉब्लम आई हुई है तो लेफ्ट साइड उसका वर्क करेगा, हम्म लेकिन जो लेफ्ट साइड है हम्म अगर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आई है तो राइट साइड अपना काम हम्म। करेगा। ऐसे स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड राइट साइड की इंजर हो आधी, तो उसको लेफ्ट साइड पे दिक्कत आएगी, ओके। और लेफ्ट साइड पे दिक्कत हो तो राइट साइड पे दिक्कत आएगी। ये इनकम्प्लीट लीजन्स में है। जैसे हमने अभी देखा, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होती हैं वो कंप्लीट हो सकती हैं या इनकम्प्लीट हो सकती ओके। हैं। अगर कंप्लीट है तो जहाँ पर चोट है उसके नीचे पूरा पोर्शन जो है वो अफेक्ट होगा। पूरा। और अगर इनकम्प्लीट इंजरी है तो उसका कुछ पोर्शन, एक साइड नॉर्मल होगा और दूसरी साइड में उसको प्रॉब्लम होगी। या उस साइड भी कंप्लीट लीजन हो सकता है, हाफ साइड में भी कंप्लीट लीजन हो सकता है, या पार्शियल लीजन हो सकता है। ओके। नाउ हाउ डू वी क्लासिफाई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी? क्लासिफिकेशन इज पैराप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया। मतलब अगर सिर्फ दोनों लोअर लिम्स अफेक्ट हों, पैरालाइज्ड हों, तो इसको पैराप्लेजिया बोलते हैं। और अगर चारों लिम्स, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स अफेक्ट हों, तो इसको हम क्वाड्रीप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया बोलते हैं। और हमारे पास कुछ स्केल्स हैं: एशिया इम्पेयरमेंट स्केल, एशिया मोटर सेंसरी स्केल, and FIM means functional limitations. Then we come to मैनेजमेंट। एक्यूट केयर मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं? सबसे पहले तो जहाँ पर एक्सीडेंट हो उसको, उस मरीज को हमें फर्स्ट एड देना है। मतलब उसको जो चोट है वहाँ सफाई करनी है। कोई बोन फ्रेगमेंट टूट के वहाँ तो नहीं रुकावट कर रहा। और अगर कहीं से कान, नाक या मुंह से ब्लीडिंग आ रही है तो उसकी ब्लीडिंग को हमें साफ करना चाहिए। और उस फर्स्ट एड देने के बाद जब वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, तो फिर हम उसे सोचते हैं हॉस्पिटल ले जाने की। ट्रांस इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है टोटल मैनेजमेंट का और कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन का। हम लोगों को देखना चाहिए कि जिस जैसे मरीज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वी शुड ट्रांसफ़र हिम लाइक ए लॉग ऑफ वुड। मतलब इसमें 3-4 व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। एक व्यक्ति उसका सिर पकड़ता है, दूसरा उसकी छाती, तीसरा व्यक्ति उसका एब्डोमेन मतलब पेल्विस, और चौथा व्यक्ति उसकी लेग्स या लोअर लिम्स। तो इसको, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है या शिफ्टिंग है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है टोटल टोटल ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। तो इसमें अगर जरा सी भी लापरवाही हो गई तो फिर मरीज को काफ़ी दिक्कत आने का डर है। एक्यूट केयर मैनेजमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी: इमीडिएट स्पाइनल इमोबिलाइजेशन। फिर मिथाइल प्रेडनिसोलोन, इट इज ए स्टेरॉयड, इट इज गिवन विद इन 8 आवर्स ऑफ सर ये इंजरीज। थोड़ा सा बताएंगे कि हाँ इमीडिएट स्पाइनल इमोबिलाइजेशन क्या है? हाँ, इमीडिएट स्पाइनल इमोबिलाइजेशन मतलब मरीज को बिस्तर पे लिटा देते हैं और उसको हिलने से मना करते हैं ताकि उसको जो इंजरीज हैं वो हील। इमीडिएट मींस इंजरी के विद इन फ्यू आवर्स। मतलब जितना जल्दी हम उसको एक अच्छे सेंटर में एडमिट करेंगे उतना उसके लिए अच्छा है। तो इमीडिएट स्पाइनल इमोबिलाइजेशन मतलब, इमोबिलाइजेशन मीन्स रेस्ट देना और स्पाइन का, और इमीडिएटली। इसके बाद हम कुछ दवाइयाँ शुरू करते हैं, जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन इज स्टार्टेड विद इन 8 आवर्स ऑफ द इंजरी। Then acute management of spinal cord injury make the difference between recovery and lifelong disability. Acute spinal cord injury is a complex, multifaceted
problem. Mechanical trauma causes direct neuronal damage. However, a large number of axons are lost as a result of secondary pathophysiological events. Now, ये pictorial diagram है जिसमें causes of spinal cord injury लिखे गए हैं और इसमें जो मेजोरिटी है वो व्हीकुलर एक्सीडेंट्स हैं. उसके बाद वायलेंस है जैसे गन शॉट, पर्सनल कॉन्टैक्ट, देन फॉल फ्रॉम हाइट लाइक ट्रीज, बिल्डिंग्स एटसेट्रा, देन स्पोर्ट्स इंजरीज एंड others are 8%. Now, most common causes of road traffic accident are motor vehicle accidents, violence, falls from height, and sports injuries. Now we come to revision of spinal anatomy. Now, although the increased stability of the supporting structures in the thoracic spine provides relative protection for the spinal cord, the narrow thoracic spinal cord diameter is as compared with the large lumbar canal diameter leaves little room to spare for neural element protection. This may explain the increased incidence of catastrophic neurological injury associated with thoracic spine injury. Spinal anatomy. Thoracolumbar region is a transitional junction between the stable, less mobile thoracic spine and the more flexible lumbar spine. Now, in this functional junction, in this junctional region, the rib cage no longer provides protection and support, thus rendering the thoracolumbar spine more vulnerable to injury and makes it the most common location for burst fracture. The anatomical characteristics of thoracic and lumbar spine may contribute to the pattern of injury, spinal injury. जो thoracic और lumbar spine की configuration है या anatomy है, उससे इनको चोट लगने का, स्पेशली lumbar spine में चोट लगने का ज़्यादा चांस होता है. The thoracic spinal cord is shielded from injury by regional paraspinal muscles and by rigid thoracic rib cage. The sternum and rib cage significantly restrict thoracic spine motion and stabilize this region. Increase in stability of thoracic spine is also a function of facet joint orientation. The more coronal thoracic facets resist flexion and extension and provide minimal resistance to torsional loads, the more sagittal lumbar facets permit significant flexion and extension and limit rotation. Dennis classification of acute thoracolumbar injury is probably the most widely accepted classification. In this classification system, the thoracolumbar injuries are grouped into minor and major injuries. Minor injuries include fractures of the spinous and transverse processes, the pars interarticularis and facet joints. Major spinal injuries include compression wedge fractures, burst fractures, shear fracture, and fracture dislocations. Now, a careful patient history and physical examination are essential in the evaluation of a patient with a spinal injury. The patient history should investigate the circumstances of the accident. The physical examination should include careful visual inspection and systemic palpation. A complete systematic neurological examination can help us to determine the anatomical level of spinal injury. मतलब स्पाइन में इंजरी सर्वाइकल स्पाइन में हुई है, डोर्सल स्पाइन में हुई है या लंबर स्पाइन में हुई है, ये हम मरीज को एग्जामिन कर काफ़ी हद तक बता सकते हैं. तो सर ये ज़रा थोड़ा सा बताएंगे कि किस किस तरीके से वो इसका एग्ज़ामिन किया जाता है कि मालूम चल जाए कि उसको
उसके बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में जो है वहाँ पर उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का प्रॉब्लम हुआ है। जैसे किसी आदमी को सड़क पर एक्सीडेंट हुआ, तो हम्म, और वहाँ पर डॉक्टर गए तो डॉक्टर पूछेंगे आपको क्या तकलीफ है, तो वो बोलेंगे मेरे को कमर के मिडिल पोर्शन में हम्म, पेन है। हम्म, तो उस पोर्शन को जब पेशेंट लेटा हुआ है तो हम कोशिश हम्म, करते हैं उसको पूरा एक्सपोज करने की। हम्म, हालांकि वो मिड बैक में पेन बता रहा है, लेकिन उसको चोट अपर बैक में या लो बैक में भी हो सकती है। हम्म, इसीलिए हम स्पाइन को पूरा एग्जामिन कराते हैं बिटवीन सर्वाइकल टू सैक्रल स्पाइन, ओके। ताकि हमें पता लग जाए कि ये जो इंजरी है ये क्वाड्रिप्लेजिक इंजरी है या टेट्राप्लेजिक, पैराप्लेजिक इंजरी है। पैराप्लेजिक इंजरी है। ठीक है। ओके, तो सर आप थोड़ा सा हमें ये डिफाइन करेंगे कि इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इस हाँ इंजरी के? हाँ हाँ, वो मैं बता। A complete systemic neurological examination can help determine the anatomical level of spinal cord injury, whether it is cervical, dorsal, lumbar, or sacral. Now, clinical evaluation and anteroposterior and lateral radiographs of the entire spine. हालांकि उसको चोट जो है लंबा स्पाइन में है, लेकिन फिर भी हम जब एक्सरे करते हैं तो पूरे स्पाइन का एक्सरे करते हैं। Anteroposterior and lateral radiographs of the entire spine are the initial radiographic method for determining the level of spinal abnormality. Greater detail of the injury pattern can be revealed by special investigations like CT scan and magnetic resonance imaging scans. इसको MRI बोलते हैं। तो सर क्या इसमें एक्सरे के थ्रू भी इस प्रॉब्लम को पता किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर काफ़ी सारे फ्रैक्चर्स, बोन के फ्रैक्चर्स एक्सरे में दिख जाते हैं, हम्म, और एक्सरे एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है जांच करने का या पता करने का कि किस लेवल पे इंजरी है, हम्म, और वो इंजरी कंप्लीट है या नहीं है। हम्म, और उन लोगों को मतलब एक्सरे एक बहुत ही बेसिक और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है हम्म, जो हमें काफ़ी कुछ बताती है। Now, CT scan is indicated for further evaluation of thoracolumbar injuries. MRI can provide prognostic information that may help in the treatment of spinal cord injury. Now, MRI is inhibited, indicated in all cases of acute neurological deficit and in cases of progressive neurological deterioration. मतलब किसी मरीज में मान लिया रिकवरी नहीं हो रही तो उसको हम कोशिश करेंगे डॉक्टर को दिखाने की। हम्म, ये इस डायग्राम में दिखाया गया है पूरा स्पाइन, नेक से लेके कॉक्सिक्स या टेल बोन तक, एंट्रोपोस्टीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू एंड लेटरल व्यू। और हम देखते हैं जैसे हमने पहले जाना, सर्वाइकल स्पाइन में 7 वर्टिब्रा होती हैं, डोर्सल स्पाइन में 12 वर्टिब्रा होती हैं, लंबर स्पाइन में 5 वर्टिब्रा होती हैं। यहाँ तक तो वर्टिब्रा, हर वर्टिब्रा अलग अलग है, लेकिन जो सैक्रम है उसमें सैक्रम और कॉक्सिक्स, उसमें जो बोन्स हैं वो आपस में यूनाइटेड होती हैं। तो ये राइट साइड पे डायग्राम दिखाया गया है शोइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, spine, and it is also showing bodies, intervertebral disc, facets, facet joints, spine and transverse processes. नाउ ये एक ट्रांसवर्स डायग्राम है, और इसके बीच में जो वाइट वाइट स्पेस है ये स्पाइनल कॉर्ड है, और चारों तरफ इसके स्पाइन के मसल्स दिखाई दे रही हैं। नाउ हाउ डू वी क्लासिफाई injuries? There are two ways of classifying spinal cord injury: Holdsworth two-column theory or Dennis three-column theory. Now, anterior, we divide the spine into anterior column, middle column and posterior column. Now, इसको करने के दो तरीके हैं, होल्ड्सवर्थ एंड डेनिस। Now, traumatic injuries of vertebral and neural tissues due to corresponding pulling or shearing forces. Now, most common locations
are cervical and cervical 1 to 2, cervical 4 to 7, 12th thoracic vertebra, and second lumbar vertebra. These are the most common locations of spinal cord injury. Locations reflect most mobile portions of vertebral column, and the locations where spinal cord occupations most occupies most the vertebral canal. इस डायग्राम में भी स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट पोर्शंस बताए गए हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड, देन वर्टिब्रल डिस्क, बोन, एटसेट्रा. Now, vertebral injury can occur due to fracture, dislocation, or both. Now, within minutes after injury, hemorrhages appear in the central gray matter, paya, and arachnoid matter. ये तीनों लेयर्स जो हैं ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करते हैं. Vertebral injuries can occur due to fractures, dislocations, or both. Within minutes after injury, hemorrhages appear in the central gray matter, पाया एंड अरेक्नॉइड. ये तीनों लेयर्स को मेनिंजेस बोलते हैं हम. अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर, और इनको हम और ड्यूरा मैटर, इन तीनों लेयर्स को, टिश्यूज को हम मेनिंजेस बोलते हैं. लोकल हेमरेजेस रिड्यूस वास्कुलर परफ्यूशन. और मेनिंजेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड का, नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड का. और मेनिंजेस जैसे कपड़े पहनते हैं ना, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर 3 लेयर्स होती हैं टिश्यूज की. सबसे बाहर वाली लेयर को ड्यूरा मैटर बोलते हैं, और जो सेकेंड लेयर है उसको अरेक्नॉइड मैटर बोलते हैं, और तीसरी लेयर को जो बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड से चिपकी हुई होती है उसको हम पाया मैटर बोलते हैं. तो ये तीनों जो लेयर्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को बाहरी चोटों से या इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं. यानी कि ये जो सेंट्रल ग्रे मैटर्स है, पाया मैटर्स है, और ये एरेक्नॉइड है, ये जो है बाहर इसके जो अटैक से, मतलब स्पाइनल कॉर्ड को बचाती है, इंजरी से बचाती है. तो व्यूअर्स, इस तरीके से हमने जाना कि स्पाइन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या है, और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है. इसके साथ ही इसकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं, इन सब के बारे में हमने आज के अभी के सेशन में हमने जानकारी ली. बाकी का टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. चंदा है तू, मेरा सूरज है तू. This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू. जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर. With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू, आ मेरी आँखों का तारा है तू. She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person.
वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि व्यूवर्स, अगर आपकी इस रिगार्ड में कोई सजेशन है या आपकी कोई क्वेरीज़ हैं जो कि आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारी टोल फ्री नंबर पर। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008। हमारा लैंडलाइन नंबर है 26511611 और हमारा फैक्स नंबर है 26511609। तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए और शेयर कीजिए अपने व्यूज़ हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। तो ब्रेक में जाने से पहले, जैसा कि हमने जाना था कि स्पाइन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है। बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो स्पाइंस के बीच में होती है, स्पाइंस रिंग्स के फॉर्म में होती हैं और जिनके बीच में स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। और उसके अलावा हमने जाना कि स्पाइनल कॉर्ड के कॉजेज़ क्या होते हैं, जैसे कि ऊंचाई से गिर जाने की वजह से, या फिर कोई फ्रैक्चर हुआ है, या कोई जो वायलेंस हुआ है, किसी के ऊपर कोई हमला हुआ है, तो उसकी वजह से भी नर्व कैनाल से डिस्कनेक्ट हो जाने की वजह से बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ ही साथ हमने जाना के टाइम काम करते हैं। Now, critical factors in recovery are early pre-hospital recognition of injury. अगर हम चोट को जितना जल्दी पहचान पाएंगे उतना ही जल्दी उसका इलाज संभव है। प्रॉम्प्ट रिससिटेशन मीन्स उसको फर्स्ट एड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ब्लड, तो इसको हम रिससिटेशन बोलते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ इंजरी, देन अवॉइडेंस ऑफ एडिशनल न्यूरोलॉजिकल इंजरी एंड मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। Now, pre-hospital management of spinal cord injury patients. Management of spinal cord injured patients begins immediately after the injury with the first providers at the accident site. Many studies have demonstrated the critical role of pre-hospital provider in both preventing extension of spinal cord injury and in maximizing oxygenation and circulation to improve the chances of neurological recovery. It has been previously estimated that 3 to 25% of spinal cord injuries occur after the initial traumatic insult, either during transit or early in the course of treatment. Now, pre-hospital management. 5 responsibilities of pre-hospital care are initial evaluation, resuscitation, immobilization, extrication and transportation. Now, how do we evaluate, how do we know that a person has spinal cord injury or not, and how grave, how serious, how bad it is? So there are many ways of evaluating the seriousness level or the level of spinal cord injury. Evaluation phase consists of advanced trauma life support, emphasized primary and secondary survey. Now, ABCDE of trauma primary survey are: A stands for airway maintenance with cervical spine control, मतलब उसका जो सांस लेने का रास्ता है वो खुला है या नहीं, उसमें किसी वजह से कोई ब्लड तो नहीं है, फ्लूइड तो नहीं है, उसमें इंजरी तो नहीं है। तो हमें, क्योंकि अगर आदमी सांस नहीं ले पाएगा उसको डेथ हो सकती है, तो सबसे हमें पहले उसका नाक, गला और ट्रेकिया, मतलब एयरवे चेक करना है कि उसका एयरवे पेटेंट है या नहीं, खुला हुआ है या नहीं। बी स्टैंड्स फॉर ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन। अगर उसका सांस का रास्ता ठीक है तो वो सांस ले पा रहा है या नहीं, किसी वजह से उसको चेस्ट में इंजरी तो नहीं है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ। फिर सर्कुलेशन विद हेमरेज, सी स्टैंड्स फॉर सर्कुलेशन विद हेमरेज कंट्रोल, उसका जो कलर है स्किन का वो पिंकिश है या नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा पर्सन को ब्लीडिंग हो गई तो वो पेल हो जाएगा या वाइट हो जाएगा, उसका जो पिंक कलर है नॉर्मल वो कम हो जाएगा। डी स्टैंड्स फॉर डिसेबिलिटी, it tells a neurological status, and E stands for exposure or environmental control completely undress the patient while
preventing hyper or hypothermia. Now, after completing the primary survey, pre-hospital provider should perform an abbreviated secondary survey which consists of a more detailed head-to-toe evaluation of the spinal cord injured patient. All evaluation must take place with full spinal immobilization. मतलब हमें spine को move नहीं करना है. A quick motor examination of grip strength and a foot dorsiflexion evaluation in addition to a gross sensory examination should alert pre-hospital provider to a complete or partial spinal cord injury. Signs of incontinence, urine retention, priapism or loss of anal sphincter tone should be noted. Now, even in the absence of any of the above findings, the multi-trauma or major trauma mechanism patient must be placed in a rigid collar and backboard to be immobilized for transport. In an unconscious patient, it must be assumed that the force that rendered the patient unconscious has injured the cervical spine until the radiography of its entire length proves otherwise. मतलब हमें मानना चाहिए कि अगर व्यक्ति बेहोश है, उसको सिर में चोट है, तो उसके स्पाइन में, सर्वाइकल स्पाइन में भी चोट होने के काफ़ी चांसेस हैं. अब what is resuscitation? It begins during evaluation and primary survey. Now, airway control is of highest priority and should start with immediate application of oxygen while the cervical spine is being immobilized. Now, initial airway management includes basic maneuvers of chin lift, jaw thrust, and placement of a nasal or oral airway. Now, suction should be available to remove blood, secretions, and possible foreign bodies. If adequate oxygenation cannot be maintained, and the paramedic crew is properly trained, the patient should be prepared for intubation. Pre-hospital circulation resuscitation consists of aggressive intravenous access and proper fluid resuscitation. Cervical spinal cord injury patient may present with either neurological or hematologic shock. Neurological shock is the result of spinal cord injury at or above the fourth thoracic or dorsal vertebra. These injuries cause a loss of sympathetic peripheral vascular tone and thus reduce central venous return. Because spinal cord injuries are likely to involve multiple levels, it is imperative to immobilize the entire spine. The best method of immobilization of the entire spine is use a rigid board. The neck is first secured with a rigid collar and sandbags are placed on either side of the head. Proper pre-hospital immobilization, resuscitation and transportation not only prevents further spinal cord injury but maximizes the possibility of the neurological recovery also. Now, extrication and transport. Once the patient has been properly immobilized, safest and fastest method of extrication and transportation should be adopted. Patient should be moved by 4 persons, one responsible for head and neck, one for shoulder and chest, one for hips and abdomen, and one for legs. In high injury, the usual vasomotor response is impaired. The patient is therefore poikilothermic and hypothermia is particular risk. Now, active medical management. What are our goals? We try to minimize the neurological damage caused during the primary injury and preventing further spinal cord injury. Secondary to hypoperfusion, ischemia and biochemical inflammatory changes. Now, vertebral column stabilization. Most injuries of the vertebral column do not result in spinal cord damage, but traumatic
spinal instability places the patient at risk for neurological injury if the injured spinal segments are not protected. That is why we immobilize the injured spinal segments. All trauma victims, especially those complaining of neck or back pain, should be properly immobilized as quickly as possible. The earlier we try to prevent complications or limit the complications. The cervical spine can be immobilized on a short-term basis with a hard cervical collar, and sandbags should be placed on each side of the head. The most commonly used cervical collars are Philadelphia collars. Patients with thoracic and lumbar injuries should be kept supine and carefully moved using a log rolling technique to avoid flexion or extension of the spine. They can be immobilized in standard beds, rotating beds, or turning frames. When we are transporting a patient, then the patient should be handled like a log of wood. जैसे लकड़ी का एक लॉग होता है, उसी तरह हमें पेशेंट को टर्न करना है या शिफ्ट करना है साइट ऑफ इंजरी टू स्ट्रेचर. जैसे हम पहले भी जान चुके हैं, देयर शुड बी 4 persons. वन शुड सपोर्ट द हेड, द अदर पर्सन शुड सपोर्ट द शोल्डर एंड द चेस्ट, थर्ड पर्सन शुड सपोर्ट द abdomen and pelvis, and fourth person should support the legs. Now, if the initial neurological examination suggests a spinal cord injury, or if traumatic injury renders the patient unconscious, stability of the spine is determined with radiological studies, that is plain X-ray, CT scan, or MRI. When there is radiological evidence of vertebral column bony or ligamentous displacement, the goal of management is the realignment and fixation of the involved segments. Now, patient with cervical spine injuries should be initially managed by skeleton traction. Applied through skull caliper, patient traction is aimed at reducing any fracture and dislocation, relieving pressure on the cord, and splinting the spine. Initial weight applied is 10 pounds, with weight added to 10 pounds increment until reduction is achieved. Now, immediate after each increment, neurological examination and a lateral radiograph is obtained. Once reduction is confirmed, 10 to 15 pounds of weight is used to maintain the reduction. Now we come to pharmacological management, means treatment with drugs. Aside from the mechanical factors that compromise spinal cord function, local tissue perfusion and oxygenation can profoundly modulate the extent of injury resulting from any given mechanical stress. Other processes that take place at the site of injury, such as edema, hemorrhage, axonal degeneration, or demyelination, ultimately alter the cellular bioenergetic mechanisms. Now, focal ischemia is compounded by systemic hypoxia or hypotension, because autoregulation is lost in the region of the injury and blood flow changes more directly with alterations in systemic hemodynamic. Histopathologically, the region of the injury demonstrates signs of inflammation such as an early neutrophil invasion. Now, these neutrophils release lytic enzymes that further damage vascular, neuronal, and glial cells. This is followed by macrophage penetration, thus precipitating the phagocytosis of hemorrhage and necrotic tissue. Now, corticosteroids have been used in neurotrauma based on in vitro and animal studies that demonstrated their theoretical ability to stabilize membranes, inhibit lipid peroxidation, stress. Corticosteroids have been used very frequently in neurotrauma based on in vitro and animal studies that demonstrated their
theoretical ability to stabilize membranes, inhibit lipid peroxidation, suppress vasogenic edema by restoring the blood central nervous system barrier, enhance spinal cord blood flow, inhibit pituitary endorphin release, and attenuate the inflammatory response. The timing of steroid therapy may be a critical element in its ultimate efficacy. The mechanism of lipid peroxidation inhibition may be lost if corticosteroid is administered more than 8 hours after spinal cord injury. The conclusions of NASCIS 3 trial were that corticosteroid therapy, when started within 3 hours of spinal cord injury, should be continued for 24 hours, and when initiated between 3 to 8 hours, should be continued for 48 hours unless there are complicating medical factors. It must be kept in mind that steroid therapy is associated with systemic effects including wound infections, pneumonia, and GI gastrointestinal bleed. The inciting events that lead to spinal cord injury are followed by a series of detrimental hemodynamic and biochemical processes that can be mitigated by early and aggressive medical management. Below the level of the injury, the spinal cord is often hyperperfused, मतलब उसका जो blood supply है वो इंजरी के नीचे कम हो जाता है, इसको hyperperfusion बोलते हैं because of the हाँ मेरा जो क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने कहा कि जब स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है तो ब्लड सप्लाई जो है इंजरी के नीचे उसका कम हो जाता कम है, हो तो ये कैसे हो जाता है? क्या कोई क्लॉट बनना शुरू होता है या फिर उसमें कोई फैट्स जमा होने शुरू हो जाते हैं? जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो मेनिंजेस हैं, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, वर्टिब्रा है, इन सब को भी चोट लगती है। ओके। तो अगर किसी ब्लड वेसल को चोट लगेगी तो वहाँ उसके वहाँ रुकावट हो जाएगी, उसके बाद वाला उस क्लॉट भी बन सकता है या ब्लड वेसल फट भी सकती है चोट से, और उसके नीचे आगे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो उसकी वजह से भी जो नर्व्स होते हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। नहीं करते। ओके। बिलो द लेवल ऑफ इंजरी स्पाइनल कॉर्ड इज ऑफन हाइपरपर्फ्यूज्ड, मतलब उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द एसोसिएटेड न्यूरोजेनिक शॉक, हेमरेज, वेसोस्पाजम और थ्रोम्बोसिस। द पोस्ट ट्रॉमेटिक हेमरेज एंड इडीमा इज फॉलोड बाय एक्सोनल एंड न्यूरोनल necrosis. Now, options for relieving upper airway obstruction include chin lift, jaw thrust, continuous positive pressure, airway pressure, or nasal or oral airway insertion. Now, oral or nasopharyngeal airway insertion produces minimal cervical spine movement. Bag and mask ventilation provides oxygenation but is not a long-term airway control method. Spinal cord injury patients require establishment of a definitive endotracheal airway in the following circumstances: diminished or absent airway protection mechanisms because of coexistent intracranial injury or other pathology, evidence of airway obstruction in the context of multiple trauma, acute respiratory failure in patients with injuries at or above C4 level who lack diaphragmatic function, and in patients with coexistent thoraco-abdominal trauma, inability to cough, clear secretions, and participate in bronchial hygiene maneuvers secondary to the reductions in forced expiratory volume and forced vital capacity that develop with loss of intercostal and abdominal muscle activity. Now, in conclusion, maintaining the head and neck in neutral position, performing the intubation technique with which the practitioner is most comfortable, and assessing in conclusion, we will read it again. Maintaining the head and neck in neutral position means उसकी जो neck है वो right side नहीं होनी चाहिए, left side नहीं होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए, इसको neutral position बोलते हैं. Performing the intubation technique with which the practitioner is most comfortable,
and assuring adequate spinal cord perfusion pressure. Proper oxygenation and ventilation are the primary goals which should be achieved while managing the airway of a spinal cord injury patient. Now, after airway obstruction, airway management, we come to respiratory. In ABCD, first it is A stands for airway, B stands for breathing. So, how do we do respiratory management? Pulmonary complications are the single most common cause of morbidity and mortality after spinal cord injury. Lumbar cord lesions have little or no effect on ventilation or cough. Lesions of thoracic cord can impair cough but have little effect on normal breathing. Cord injury at or above C5 can affect diaphragmatic function. Complete lesions at C3 or higher produce bilateral diaphragmatic paralysis. The loss of FRC and decrease in static lung compliance is followed by retention of pulmonary secretions, increased ventilation perfusion mismatch, and poor ability to sigh and cough. सर एक क्वेश्चन है मेरे हाँ, आपसे बताएं। कि जैसे कि आपने रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट में आपने बताया कि बेसिकली जब किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो उसके जो रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, तो क्या ये उस केस में भी होता है अगर किसी के लोअर पार्ट में भी अगर कोई इंजरी आ गई है तो? नहीं, अगर जैसे मैंने बताया ना, अगर C5 से ऊपर है तो एक हमारा जो फिफ्थ सर्वाइकल स्पाइन है उससे अगर ऊपर चोट है तो उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर नीचे चोट आए तो थोड़ा सा कम चांसेस है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नीचे भी आएगी क्योंकि उसकी रिप्स को सप्लाई नहीं होगी, नहीं मिल पाएगी। C5 एंड अबव लेवल पे उसका डायफ्राम जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमेन से अलग करता है, तो C5 से ऊपर डायफ्राम भी जाएगा, उसकी रिप्स भी जाएंगी। लेकिन C5 से नीचे लीजन है तो डायफ्राम बच जाएगा, उसकी रिप्स चले जाएंगी। सो C5 से ऊपर जो लीजन या इंजरी है वो ज़्यादा खतरनाक है। तो व्यूअर्स, इस तरीके से हमने जाना कि रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट में ख़ास तौर से जो C5 लेवल है बट स्पाइनल कॉर्ड का, वो उसके अपर रीजन ज़्यादा रिस्की होते हैं। और हमें ये भी मालूम चला कि जो इसमें कॉर्टिकोस्टीरॉइड थेरेपी भी इस्तेमाल में लाई जाती है। बाकी का सेशन हम कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेते हैं एक छोटे से ब्रेक और लौट कर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। व्यूवर्स, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर आपकी कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन इस रिगार्ड में आपके कोई क्वेश्चन है जो कि आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008। हमारा लैंडलाइन नंबर है 26511 और हमारा फैक्स नंबर है 26511 तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपने इस टॉपिक को। हम लोग रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पेशेंट्स विद लीजन्स अबाउ C5 मतलब फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा मस्ट यूजुअली बी इंट्यूबेटेड, मतलब उनको ट्यूब डालनी पड़ती है, मैकेनिकल वेंटिलेशन देना पड़ता है, एंड प्लेस्ड ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन। पेशेंट्स हु रिटेन diaphragmatic function can use some accessory respiratory muscles to augment respiration, but respiratory deterioration frequently develops gradually, often between day 4 and 7 post injury. Pulmonary function must be closely monitored. The patient will require intubation for bronchial hygiene needs. Now, the greatest incidence of atelectasis and pneumonia occur in the first 5 to 7 days and is often focused primarily in the left lower limb. Atelectasis is managed primarily with incentive spirometry, but percussion and vibration, frequent position changes, intermittent positive pressure breathing, and therapy with beta agonists may be helpful depending on the clinical situation. In summary, conscious this pulmonary assessment and aggressive bronchial hygiene are paramount in preventing and detecting pulmonary complications following acute spinal cord injury. Now we come to cardiovascular resuscitation. The physiologic and anatomical transection of spinal cord followed by loss or depression of all or most spinal reflex activity below the level of injury is known as spinal shock. Hypotension means decrease in blood pressure may be an accompanying sign depending on the level of the injury and is caused by a withdrawal of sympathetic tone. With the loss of sympathetic innervation, the unopposed parasympathetic tone predominates. Vasodilatation, hypotension, decreased peripheral vascular resistance, decreased preload, and bradycardia are part of the clinical syndrome of neurogenic shock. Now, the treatment goals during acute phase of spinal cord injury are restoration of cardiac output and tissue perfusion. Now, in the acute spinal cord injury patient, fluid and electrolyte balance can be affected by the respiratory acidosis that results from alveolar hypoventilation, metabolic alkalosis because of vomiting or gastric suction, and hypochloremia caused by vomiting, gastric suction, or loss into a dilated gut. Because patients with complete or incomplete injuries appear to have the reduced ability to excrete free water and retain sodium, they should be primarily resuscitated with 0.9% sodium chloride or other balanced electrolyte solutions. Now, during spinal shock, gastric dilatation and paralytic ileus may develop. A distended stomach also predisposes to vomiting and aspiration. To avoid this complication, stomach must be decompressed with a nasogastric tube. Stress ulcers may occur in the acute phase following spinal cord injury. Now, prophylactic therapy with H2 blockers should be given. Now, other acute GIT complications after spinal cord injury include superior mesenteric artery syndrome and pancreatitis. Bowel management program should be established once normal bowel sounds and motility are restored. Now, rectal emptying methods, most commonly a combination of suppository use and finger anorectal stimulation, promotes a physiologic pattern of evaluation in the distal colon. Now, during the period of spinal shock,
the urinary bladder will not empty spontaneously, मतलब मरीज को अपने आप यूरिन नहीं आएगा. If not drained by catheterization, bladder distension, urinary reflux, and kidney failure may occur, which can be life-threatening. Upon admission to the hospital, a Foley's catheter should be inserted for drainage of urine. Now, blood and uh, intermittent bladder catheterization is started during the subacute phase of injury when fluid intake and output have stabilized in an effort to decrease the risk of bacterial infections. सर ये थोड़ा सा हमें बताएंगे कि ये जो ब्लैडर केयर प्रॉब्लम है ये कैसे हो जाती है, इसको मतलब इसका क्या रीज़न है, क्यों मतलब ये इंजरी से कैसे इसमें इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम आनी ब्लैडर में जो नर्व्स आती हैं जिनसे हमें डिजायर होती है और हम यूरिन पास करने को कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, ये सब जो नर्व्स हैं स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं. तो अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड है तो ये डिजायर, कंट्रोल, ये दोनों चीज़ें भी मरीज की चली जाएंगी, अफेक्ट हो जाएंगी. ओके. तो ब्लैडर और बॉवल दोनों का कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड में होता है. Intermittent bladder catheterization is started during the subacute phase of injury when fluid intake and output have stabilized in an effort to decrease the risk of bacterial infections. तो यानी कि सर ये है कि अगर किसी को ब्लैडर की प्रॉब्लम हो गई, अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है जो, तो उसमें क्या स्टोन्स, किडनी में स्टोन्स के होने के भी चांसेस रहते हैं कुछ सालों बाद. बिल्कुल अच्छा. तुमने ठीक कहा, क्योंकि यूरिन ब्लैडर जो है फुल रहता है, जो मरीज होता है उसको प्रॉपरली इवैक्यूएट नहीं कर सकता, और जो स्टेटिक यूरिन है उसमें इन्फेक्शन होने का डर है और स्टोन फॉर्मेशन का डर है. एंड काफ़ी सारे पेशेंट्स, जब एंटीबायोटिक्स नहीं होती थी हमारे पास, रीनल फेलियर या रीनल कॉम्प्लिकेशंस के साथ उनकी डेथ हो जाती थी. The most frequent secondary medical complication reported during acute chaos spinal cord injury patients is urinary tract infection (UTI). Symptomatic UTI with fever, leukocytosis, and pyuria, means passing of pus in the urine, should be treated with appropriate antibiotics for 7 to 14 days. Asymptomatic bacteriuria does not need to be treated routinely. Now, incidence of 13.6% of deep vein thrombosis during acute inpatient stay. The factors implicated in the pathogenesis of deep vein thrombosis are immobility, vascular dilatation, and stasis, endothelial damage, and an increase in the level of factor 8 and fibrinogen. Now, recommended guidelines for prevention of deep vein thrombosis are based on the level of the risk. Compression hose or pneumatic devices should be applied to the lower extremity for the first two weeks after the injury, that is spinal cord injury. In the event that prophylaxis is delayed for more than in the event that thromboprophylaxis is delayed for more than 72 hours, the extremity should be tested with either non-invasive ultrasound studies or venography for thrombi formation prior to application of compression boots. Anticoagulant prophylaxis with fractionated heparin or low molecular weight heparin should be initiated within 72 hours and continued until discharge in patients with incomplete motor injuries, and for 8 weeks in patients with uncomplicated complete motor injuries. Patients with complete injuries or other risk factors should receive low molecular weight heparin for 12 weeks or until discharge from the rehabilitation. Now, pressure ulcers continue to be skin care. Now we come to skin care in spinal cord injury patients. Pressure ulcers continue to be a frequent complication of spinal cord injury. Immediately following spinal cord injury, patients should be turned every 2 hours to avoid development of pressure ulcers or bed sores. Now, specially designed foam, water, or air mattress can reduce the pressure over bony prominences but will not obviate the need for turning
Patients with unstable spines may be placed on rotating beds that rock continuously. Now, use of pillows to separate legs, maintain alignment of spine, and to prevent formation of contractures. Now, foot drop and contracture can be prevented by placing a vertical pillow between the foot of the bed and the sole of the सर foot. जैसे कि अभी इसमें ये बताया है कॉन्ट्रैक्चर, हम्म। तो ये कॉन्ट्रैक्चर क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। अगर किसी व्यक्ति का जो फुट है वो एक ही पोजीशन पे पड़ा रहे तो उस पोजीशन में वो टाइट हो जाता है या फिक्स हो जाता है, इसको कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं। ओके वो फिर उस फुट को या उस बॉडी पोर्शन को ऊपर नहीं कर सकता, नीचे नहीं कर सकता, ओके, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्चर मीन्स फिक्स हो जाना। फिक्स हो जाना। तो सर इसको ठीक कैसे किया जाए, अगर एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज कैसे? हाँ। नाउ गोल ऑफ सर्जरी इज टू प्रोवाइड a stable spine to minimize further neural damage. The two main objectives in surgery are decompression and stabilization. Now, in both instances, the optimal approach may be anterior, posterior, or both. Now, in some situations, cervical traction and halo immobilization are useful preoperative adjuncts. सर ये जरा बताएंगे कि जैसे ये जो सर्वाइकल इंजरीज होती है, इसमें सर्जरी किस तरीके से हेल्प करती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में सर्जरी के इंडिकेशंस अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आई टेल यू मोर अबाउट दिस इन सब्सिक्वेंट टॉक्स। नाउ जो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं सर्जरी के वो हैं डिकम्प्रेशन और स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन मीन्स फिक्स कर देना, और डिकम्प्रेशन मीन्स जैसे चोट लगी, ब्लड इकट्ठा हो गया, वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस कर रहा है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को प्रेस कर रहा है, और हमने ब्लड निकाल दिया ऑपरेशन करके, तो इसको डिकम्प्रेशन बोलते हैं। ओके। Now, blunt trauma can arise from a variety of mechanisms. In general, fracture or dislocation can be secondary to flexion, extension, or axial load. Most commonly, the body undergoes a sudden acceleration and deceleration force. इसका मतलब है जब हम कार में बैठे हैं तो बेल्ट पहन के बैठे हैं और कार मूव कर रही है तो हमारी बॉडी भी मूवमेंट में है, और अगर हम सडनली ब्रेक लगाते हैं, कार रुकती है, तो हमारी बॉडी भी रुकती है। तो उस जब कार चल रही थी तो एक्सेलरेशन था, और जब कार रुकी तो डिसेलरेशन है। तो अगर हमें अचानक ब्रेक लगानी पड़ती है तो उसमें हमारे स्पाइन में इंजरी होने का चांस है या हो सकती है। नाउ व्हाट आर द मैकेनिज्म्स ऑफ इंजरी? Recognizing the mechanism of injury is an important component of pre-operative evaluation. For example, flexion type injuries of the subaxial spine below C2 can produce anterior vertebral body fractures. These can appear as teardrop fractures. In many cases, flexion type injuries are associated with a disruption of the posterior spinal ligaments complex, which may not be readily apparent on plain X radiographs. Now, high quality radiographs are crucial to effectively preoperative planning. Film should include anteroposterior and lateral views of the entire cervical spine, AP lateral and lateral. Now, computerized tomography or CT scan provides highly detailed axial images of each vertebral segment and is superior to MRI for delineating fractures. CT can demonstrate non-displaced fractures not discernible on plain X-rays radiograms. In addition, CT is an excellent method for evaluating and qualifying the degree of spinal cord compromise. Now, we come to imaging. MRI is the modality of choice for evaluating the spinal cord and neural elements. Now, in addition, MRI can reveal edematous soft tissues in either the anterior or posterior cervical spine. MRI offers information regarding the integrity of the ligament structures, including the anterior and posterior ligaments, and the
posterior ligamentous complex, and the presence of herniated disc or foreign material in the spinal canal or foramina. Now these are the diagrams of these are the images. The first plane X-ray is showing 1, 2, 3, 4, 5 lesion between dislocation between C5 and C6 and posterior pressure, and other diagrams are showing imaging. Now in this patient, one of the dorsal spine seems to have fractured. Now we study spinal stability. Stability can refer to both mechanical and neurological factors. Now neurological stability denotes a state in which under the stress they are imposed, no further neural damage is caused. Mechanical stability refers to the relative motion of vertebral segments under the physiological loads of everyday activity. Now, spinal stability. To assess mechanical stability, the subaxial cervical vertebral elements have been divided into 3 columns. Effectively, the column can be considered longitudinal members that span the length of the spine. Anterior columns consists of the anterior longitudinal ligament, that is ALL, anterior aspect of the intervertebral disc, and the anterior half of the vertebral body. Likewise, the middle column is made up of the PLL, that is posterior longitudinal ligament, and the respective posterior aspects of the disc and vertebral body. The posterior column refers to all the remaining structures including the pedicle, lamina, transversus. The posterior column refers to all the remaining structures including pedicles, laminae, transversus, facet joint, and PLC, that is interspinous supraspinal ligaments. Now, a column can be disrupted by either fracture or ligamentous disruption. By definition, disruption of 2 or more columns imparts instability. Now, by collating information from plain radiography, CT scans, and MRI imaging, the integrity of each column can be known. Now, in some situations, spinal injury occurs without obvious radiographic findings. Spinal cord injury may or may not be present. In the wake, neurologically intact cooperative patient, dynamic flexion extension lateral radiographs can survive. In the wake, neurologically intact cooperative patient, dynamic flexion extension lateral radiographs can reveal abnormal motion between vertebral segments. This is best judged by drawing a longitudinal line along anterior and posterior aspects of the vertebral bodies. An abrupt break in the line should be measured. If the break is more than 3.5 mm or 11 degrees of motion is present, the spine is unstable and likely requires operative इंटरवेंशन. आपने पूछा था किन मरीजों में ऑपरेशन करते हैं, किन मरीजों में ऑपरेशन नहीं करते. तो ये हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनमें हमें ऑपरेशन करना चाहिए. जैसे अगर पेशेंट की तकलीफ़ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद बढ़ रही है और या स्पाइन अनस्टेबल है, तो हमें ऑपरेशन करना चाहिए अगर ऑपरेशन की फैसिलिटी हॉस्पिटल में मौजूद हैं. ये देखो इन पेशेंट्स में ट्रैक्शन दे रहे हैं हम, और ये इन डायग्राम्स में पेशेंट ने ऑर्थोसिस या ब्रेस पहना हुआ है ताकि उसका जो स्पाइन है वो उसमें थोड़ी सी मोबिलिटी कम हो, इमोबिलाइजेशन हो. Now, what are the goals of surgery? The main objectives in operative treatment of cervical spine injuries are to decompress the spinal cord and achieve mechanical stability. Now, the anterior approach
to the cervical spine can be used for decompression of C3, 4, 5, 6, 7. The injured discs are incised and removed piecemeal. The posterior limit to discectomy is the posterior longitudinal ligament. After disc removal, the vertebral body is removed in a similar fashion. With the corpectomy complete, the posterior longitudinal ligament is inspected. Now, if free fragments of bone or disc are noted on the pre-operative imaging, the canal must be visualized. If not already disrupted from the initial injury, the posterior longitudinal ligament can be carefully incised. At all times, clear visualization of the neural elements may be maintained when working in the spinal cord. At each level, disc level, the exiting nerve roots are inspected and decompressed. Anterior decompression leaves a void between the cranial and caudal end plates of the uninjured segments. Now, traditionally, anterior decompression and stabilization. Traditionally, this is filled with cortical bone graft. The purpose of the graft is twofold. First, it acts as a strut to maintain the height of the anterior column. The second purpose of the graft is to fuse the vertebra. The bone graft is wedged between end plates. High compressive forces help to maintain its position. With the neck extension, however, these compressive forces may be diminished. Now, although post-operative neck extension can be controlled to some extent with a hard cervical collar, many surgeons opt to place anterior instrumentation fixed to the uninjured vertebral bodies with screws. Anterior plates span the fused vertebral segments and act as an artificial anterior longitudinal ligament. In some circumstances, anterior instrumentation can obviate the need for external postoperative orthosis, shorten the length of time they are worn postoperatively, or allow for less rigid immobilization. Now, rarely the C1 C2 fracture junction is approached anteriorly because the mandible and its associated structures create an obstruction. A transitional approach has been done. Rarely C1 to C2 junction is approached anteriorly because the mandible and its associated structures create an obstruction. A transoral approach has been developed. Now, the cervical spine can be approached posteriorly at any level. Utilizing a midline incision, the paraspinal muscles are elevated off the bony elements to expose the spinal processes, lamina, and tiny transverse processes. Retropulse fragments of vertebral body or disc are the usual culprit. In some situations, laminectomy is indicated to retrieve posterior segments of bone or intervertebral disc. Decompression laminectomy begins with the removal of spinous processes down to the junction between the laminae. Next, the laminae are carefully removed piecemeal until the dual sac is visualized. ये इस डायग्राम में हमें दिखाया है कि जो वर्टिब्रा है उसको फिक्स किया हुआ है और पीछे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको वायरिंग की हुई है. नो इस डायग्राम में भी फिक्सेशन दिखाया गया है. नो वी कम टू पोस्ट ऑपरेटिव केयर. इंस्ट्रूमेंटेशन for cervical trauma has added the benefit of reducing the need for external means of post-operative immobilization. तो व्यूवर्स, इस तरीके से हमने अभी जाना कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल केयर क्या होती है, ब्लैडर केयर क्या होता है, उसके अलावा हमने स्किन केयर और स्पाइनल स्टेबिलिटी और पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में जाना. बाकी का सेशन हम डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक.
There was a time when persons with mental handicap used to be considered burden on the society. In fact, at some places they used to be killed and badly treated. Gone are the days now. Lot of changes have taken place in thinking and attitude of people towards person with mental retardation. We have moved away from this attitude of burden to the society. We no longer believe they are burden on the society, but they are productive members of our society. In fact, there is a complete paradigm shift from charity and welfare to the right-based and inclusive society. We are all working towards creating an inclusive society. In fact, now, with the implementation of UNCRPD, the whole nation is geared towards implementing the objectives of UNCRPD, which is creating an inclusive society and not segregating them. So let us all be prepared to help them participate in an inclusive society, to help them enjoy an inclusive society, to help them create an inclusive society, and let's all join hands with them. वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। व्यूवर्स, ब्रेक में जाने से पहले हमने चर्चा की थी रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हमने ये जाना कि जब किसी स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पीपल को की इंजरी हो जाती है उसके, तो उसको मैकेनिकल तरीके से रेस्पिरेटरी वेंटिलेटर उसे दिए जाते हैं। उसके अलावा उसकी रेस्पिरेटरी ट्यूब भी उसको दी जाती है। और साथ ही हमने हार्ट मैनेजमेंट के बारे में भी जाना और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल केयर के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि ब्लैडर केयर क्या होती है, जिसमें ब्लैडर केयर जो है वो ख़ास तौर से जो किडनी के यूरिन को कंट्रोल करता है, अगर स्पाइनल कॉर्ड के साथ वो कनेक्ट होता है, अगर उसका स्पाइनल कॉर्ड के साथ वो डिस्कनेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से किडनी के यूरिन में इन्फेक्शन आने शुरू हो जाते हैं, स्टोन्स की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा हमने स्किन केयर के बारे में भी जाना कि स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड जो व्यक्ति है उसके लिए स्किन की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, नहीं तो उसकी बॉडी में अल्सर्स या सोर्स बनने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा हमने स्पाइनल स्टेबिलिटी के बारे में भी हमने जाना। तो अब डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि ऑपरेशन कैसे के बाद कैसे क्या किया जा सकता है। ऑपरेशन के बाद जो केयर करते हैं मरीज की उसको हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर बोलते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर सर्वाइकल ट्रॉमा हैज़ द एडिड बेनिफिट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब जो रोड्स और स्क्रूज हम लगाते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर सर्वाइकल ट्रॉमा हैज़ द एडिड बेनिफिट ऑफ रिड्यूसिंग द नीड फॉर एक्सटर्नल मीन्स ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इमोबिलाइजेशन using anterior corpectomy and fusion alone. A halo fixator or hard collar should be maintained for 8 to 12 weeks until there is radiographic evidence of healing. If instrumentation is used and there is no associated posterior ligament injury, then the halo can be removed and a collar can be used for a short period. The goals of operative cervical fracture care are to decompress the canal, stabilize the cervical spine, restore alignment and prevent late deformity. When spinal stability is achieved through internal fixation and or well-fitting orthosis, early mobilization can help avoid the morbidity of prolonged recumbence. Now, surgical management of for thoracolumbar spinal injuries. Thoracolumbar region of the spine is a common site for vertebral injuries. The majority of thoracolumbar injuries are caused by high-level trauma. Indications for treatment and strategies of management for thoracolumbar injuries should be guided by a thorough understanding of the spinal anatomy and biomechanics and injury mechanisms. Most mechanically stable thoracolumbar injuries without neurological deficit can be treated non-operatively. Non-operative treatment should be considered in stable injury patient patterns
with limited potential for progressive deformity and neurologic compromise. Now, what are indications for surgery? Indications for surgery, surgical intervention of thoracolumbar injuries depend on the pattern of injury, alignment and stability of the vertebral fracture, neurological status of the patient and overall medical condition of the patient. In patients with spinal injury and neurological deficit, the optimal timing for medical and or surgical intervention is debated. Although not conclusively demonstrated in human clinical studies, a critical window of opportunity may exist in which decompression of the spinal elements may enhance functional neurological outcome. Now, decompression procedures may be performed posteriorly, posterolaterally, or anteriorly. Now, compression fractures. Surgical stabilization is indicated in compression wedge fractures if there is greater than 30 degrees of initial kyphosis and or greater than 50% loss of anterior vertebral body height with posterior element disruption. Now, posterior spinal surgery is the most common method of the post-operative management of this injury. The appropriate treatment of thoracolumbar spinal injuries should be guided by a thorough understanding of the interrelations of spinal anatomy, spinal biomechanics, injury mechanisms, and fracture patterns. Now, early medical management and early surgical decompression may be beneficial in preserving and improving neurologic function. Non-operative treatment can provide satisfactory outcomes in most stable thoracolumbar injuries. For unstable thoracolumbar injuries with or without neurological deficit, surgical treatment should be considered. Now, persons with spinal cord injury are at particular risk for certain types of mobility, with some differences between problems in the acute and chronic phases. Now, thromboembolic disease. It is common following spinal cord injury. Approximately 40% of patients without prophylaxis develop DVT during acute phase. The risk of death from pulmonary embolism during first year following spinal cord injury is more than 200 times that of general population. Deep vein thrombosis most commonly occurs in the weeks following spinal cord injury, with a much lower risk in persons with chronic injury. The increased risk of thoracoembolism is likely due to venous stasis and hypercoagulability. The classical symptoms of deep vein thrombosis are calf tenderness, may be lacking owing to sensory loss. Symptoms of pulmonary embolism such as shortness of breath may be wrongly attributed to concurrent problems such as atelectasis. Deep vein thrombosis can be present as fever of unknown origin, and pulmonary embolism can result in sudden death. High incidence and unreliable presentation of deep vein thrombosis suggests that screening studies should be considered. A prophylactic strategy can address venous stasis and hypercoagulability. Pneumatic compression devices can be used for the first 2 weeks followed by use of compression hose. Unfractionated heparin 5000 units subcutaneously every 12 hours, or low molecular weight heparin 30 mg subcutaneously every 12 hours, such as enoxaparin, can be administered for 2 to 3 months following injury. Placement of a cable filter can be considered in patients with multiple risk factors, for example, lower limb fracture, history of DVT, cancer, heart failure, obesity, age more than 70 years, or in those with a high complete cord lesion. Now, high thoracic and cervical spinal cord injury can cause loss of supraspinal control of sympathetic activity, with the dysregulation of functions normally impacted by sympathetic mechanisms. Baseline sympathetic activity following spinal cord injury is low, though there may be hyper-responsiveness of peripheral sympathetic receptors, perhaps as an adaptive response. Clinical problems result from inappropriately low or high sympathetic responses, the former during the acute phase and the later in the subacute and chronic phase. Problems are most common in those with injuries to level
T6 and above, as such levels isolate the sympathetic outflow to the splanchnic vascular bed. Now, resting blood pressure is low with higher cord lesions, which is asymptomatic. Orthostatic blood pressure changes can cause weakness, lightheadedness, fainting. Management includes gradual mobilization, liberal studies, sodium intake, use of compression hose, and an abdominal binder. Fludrocortisone acetate 0.1 milligram PO QD can expand intravascular volume and therefore is helpful. Now, midodrine titrated upward from a dose of 5 milligram PO BID or TID QD may be helpful. Uh, midodrine can cause supine hypertension and presumably may accelerate any tendency towards autonomic dysreflexia. Bradycardia is common soon after injury and usually resolves after several weeks. Tracheal suctioning can exacerbate bradycardia and can cause asystole, perhaps through the reflex increase in vagal tone. Symptomatic bradycardia can be treated with intravenous atropine or by a transverse external or implanted pacemaker. Now, autonomic hyperreflexia is an acute, potentially lethal complication, particularly patients with spinal injury above T6. The classical presentation is a profound headache in the presence of elevated blood pressure. Pathophysiology appears to involve an unmodulated sympathetic response to a noxious stimulus below the level of the lesion. The two most common inciting stimuli are bladder and bowel management. The two most common inciting stimuli are bladder and bowel distension respectively. The former commonly results from obstructed urinary catheter. Now, adrenoceptor hypersensitivity below the level of the lesion contributes and may be an essential factor, accounting for observation that autonomic hyperreflexia does not occur acutely following injury. AH occurs only later when such hypersensitivity has had a chance to develop. Now, headache may be due to intracranial arterial bleeding, dilatation, which occurs as a result of the effort by parasympathetic system to adjust for hypertension. Management includes placing the patient in sitting position with rest which decreases intracranial pressure, checking for an inciting stimulus, for example distended bladder, and if necessary administering antihypertensive medications such as topical neuroglycerin. Following an initial episode of autonomic dysreflexia, the patient may be sensitized and prone to further episodes of following an initial episode of autonomic hyperreflexia, the patient may be sensitized and prone to further attacks of AH until autonomic equilibrium is established. For recurrent bouts of autonomic hyperreflexia, prophylaxis with alpha blocking agents should be given. Now, then we come to neuropathic pain following spinal cord injury is perceived at or below the level of the injury. Descriptions often involve temperature, for example hot, burning, subburned, frostbitten, and electricity. For example, an electric shock. Pain can exist apart from any external stimulus, rest pain, or can result from stimulus that would, under normal conditions, not cause any pain. Allodynia or pain can be excessive in response to a painful stimulus. This is called hyperglycia. These symptoms may result from the changes in central neurological deficit. These symptoms may result from changes in central neuronal function, including increased spontaneous activity and reduced threshold of response. Evaluation of neuropathic pain following spinal cord injury must include consideration of possibility of a treatable underlying
conditions such as unstable spine or post-traumatic cystic myelopathy. Now, medical treatment includes use of anticonvulsants and antidepressants. Anticonvulsants like gabapentin initial dose 100 milligram TID, gradually titrated upwards, which upwards typically is anticonvulsants like gabapentin typically used with precautions for sedation. Now, TCA or tricyclic antidepressants may be useful for more constant diffuse pain. Amitriptyline initial dose 10 milligram, PO QHS gradually titrated upwards is one of the several drugs. Precautions must be taken for its anticholinergic effects. Data from Connexi CO coping with an neuropathic C spinal cord injury pain trial noted decreases in pain intensity, decreases in pain related disability, reduced anxiety, and increases in participation in activities for the parties who participated in a multidisciplinary cognitive behavior therapy program. Now, spinal cord injury typically is followed by a period of bladder flaccidity with the suprasacral injury. Reflexes eventually turn. However, these reflexes may be made to cause sufficient binding. However, these reflexes may be unable to cause effective voiding because of the tendency to reflex sphincter activity to directly oppose reflex detrusor contraction. This opposition occurs because of the isolation of urinary tract apparatus from higher centers, which normally coordinate reflex activity. The problem is called detrusor sphincter synergy. Acute bladder management is by far of an indwelling catheter, as the bladder is likely to be flaccid. Intermittent catheterization is not practical during the initial phase when urine output cannot be controlled and is likely to be high because of administration of intravenous fluids. Now, chronic use of indwelling catheter is avoided when possible, as it can cause various soft tissue problems, renal problems, and bladder cancer. Selection of a bladder drainage method ideally is made following a urodynamic evaluation. CIC is a method available to those with good hand function or skilled attendants. Patient is instructed to limit fluid intake. The catheterization is performed every 4 to 6 weeks. Reflex bladder contractions, which could cause high voltage pressure and incontinence between the catheterization, can be inhibited by agents such as oxybutymine or tolterodine. Now, reflex voiding into a condom catheter is an option available to men with reflex bladder contractions. A woman with high tetraplegia and lack of skilled worker will often elect to use a long-term indwelling catheter. Now, neurogenic colonic dysfunction is a particularly distressing and limiting impairment for a substantial proportion of patients with spinal cord injury. Lower motor neuron dysfunction as well as lower motor neuron dysfunction as well as with chorda equina and conus medullaris injury causes constipation with slow colonic transport and incontinence due to a flaccid sphincter mechanism. Upper motor neuron dysfunction also causes contribution with slow colonic transit and poor retention because of the spasticity of the sphincter apparatus. However, with upper motor neuron injury, reflexes allowing defecation may remain functional and may be exploited in establishing a bowel program. The bowel program is a regimen repeated on a daily or every other alternate days that may include
Diet. Now, a bowel program is a regimen repeated on a daily or every other day basis that can be included diet, that can include diet, specified fluid intake, oil, medication per rectum, timing and positioning. The goals of the program are continence and convenience. Now, following steps are involved in establishment of a bowel program. Evaluation, preparation of the patient, trials of a specific bowel program, adjustment of the program. Evaluation includes obtaining patient history to determine any pre-injury problems. Preparation of the patient includes education about the anticipated program. Specific program may include several measures. A typical problem is stool that is too hard because of the long colonic transport time, which leads to drying of the stool. Now, intervention includes management or maintenance of adequate fluid and fiber, with fiber acting as a sponge to hold moisture within the stool. A second problem is prolonged colonic transit time. Now, a third problem is inconvenience. Specific evaluation strategies may differ for upper and lower motor neuron problems. With upper motor neuron injury, defecation can be triggered with application of an irritant to the anorectal area, such as stimulation Finger. can be triggered with upper motor neuron injury. Defecation can be triggered with application of an irritant to the anorectal area, such as stimulation with a glove finger or application of a biscardol enema or suppository. With lower motor neuron bowel dysfunction, evacuation can be used, the use of salva maneuver and digital removal. In either case, the emptying is facilitated by a seated position on a commode as opposed to side lying. Heterotrophic ossification is one of the complications, very important complication. It is the formation of new bone in soft tissue planes surrounding a joint, and it decreases range of motion, and there are many drugs which can be used. Etidronate, non-steroidal anti-inflammatory drugs, and irradiation. Etidronate is given for 2 weeks. Measures to possibly limit the eventual amount of bone mass formed include use of etidronate, non-steroidal anti-inflammatory drugs, that is NSAIDs, and irradiation. Etidronate is given for 2 weeks, followed by in the dose of 20 milligram. Then it can be reduced to 10 milligram for at least 10 weeks. Now, an intravenous preparation of etidronate also is available with acute use. Indomethacin also can be given. Low dose irradiation can be applied. Now, severe loss of range of motion can be treated surgically. Now, these are the pressure ulcers. It is the single most common complication of spinal cord injury. It can be most limiting sequelae of SCI and can confine an otherwise independent individual to bed rest. Now, the location, it can come on many pressure areas in the back, and trochanteric ulcers are commonly due to excessive side lying. Sacral ulcers, if high, may be done to supine lying. Now, these are the treatments and prophylaxis. Now, then we come to spasticity. Spasticity is velocity dependent increase in muscle tone and occurs commonly following spinal cord injury and other types of upper motor neuron injury. Now, it causes resistance to passive motion of the limbs, exacerbated deep tendon reflexes, clonus, and involuntary contraction of muscle. It has desirable and undesirable side effects, and there are many drugs to treat this spasticity. Botulinum toxin injection can be given, intrathecal baclofen can be given. Now, these are the drugs in different तो doses. यानी कि जो सर ये स्पास्टिसिटी है, इसमें जो खास तौर से ये जो मसल्स है वो पूरी तरह टाइट हो जाती टाइट हो है, जाती अकड़न हो जाती है. अकड़न हो जाती है. यस. तो इसके लिए आपने जो बताया प्रिवेंटिव मेजर्स, इसमें रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, कोल्ड थेरेपी, एंड therapy. उनसे नहीं ठीक हो तो फिर ड्रग्स. Lastly, we come to gait. Some degree of ambulation may be possible for persons with thoracic level complete paraplegia and no lower motor neuron.
इसमें हम और अलग तरह अलग अलग लेवल के ऑर्थोसिस या ब्रेसेस दे सकते हैं। और दिस इज द डायग्राम शोइंग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स, दे आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। these are the different यानी walking aids ये and सब wheelchair। इन्हें व्हील चेयर्स और ये कुछ आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह यस प्रोवाइड किए जाते हैं। यस यस, ब्रेसेस बोलते हैं हम इनको, वॉकिंग एड्स बोलते हैं, वॉकर, केन, ऑर्थोसिस। थैंक यू सो मच सर। Then lastly, psychological adjustment and life satisfaction is very important part of spinal cord management. थैंक यू सो मच सर। व्यूवर्स, चर्चा करते करते हम अपने वक्त के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं और हम बता दें कि हमने आज के टॉपिक में मैनेजमेंट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जानकारी ली। हमने जाना कि स्पाइन क्या है और स्पाइनल कॉर्ड क्या है। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली स्पाइन के बीच में पाया जाता है और जो कि पूरी बॉडी को जो है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के साथ जो है ब्रेन के साथ ये कनेक्ट होता है और पूरी बॉडी को ये कंट्रोल करता है। उसके अलावा हमने ये भी जाना कि जो जब स्पाइनल कॉर्ड से कोई व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है तो उसमें हमें किस तरह के ट्रीटमेंट इस्तेमाल में लाने चाहिए, क्या कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से ये इंजरी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जैसे कि हाई स्पीड कार क्रैश हो जाने की वजह से। और उसके अलावा हमने ये भी जाना कि जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में ख़ास तौर से जो कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं वो हमें ये देखने को मिलते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लैडर केयर में भी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए जो है स्पाइनल कॉर्ड जो मैनेजमेंट है वो इसमें अपना रोल प्ले करते हैं और उसके लिए वो ट्रीटमेंट्स और मेडिकेशंस और उसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो मैं अपने एक्सपर्ट का धन्यवाद करना चाहूँगी कि सर आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और मुझे और हमारे व्यूवर्स को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, उसके मैनेजमेंट, उसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशंस के बारे में इतनी इम्पॉर्टेंट बातें बताई। मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे व्यूवर्स को काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नए एक्सपर्ट्स के साथ। देखते रहिए RCI का नवशिखर चैनल। तब तक के लिए Of acute neurological deficit and in cases of progressive neurological deterioration। मतलब किसी मरीज में मान लिया रिकवरी नहीं हो रही तो उसको हम कोशिश करेंगे डॉक्टर को दिखाने की। ये इस डायग्राम में दिखाया गया है पूरा स्पाइन, नेक से लेके कॉक्सिक्स या टेल बोन तक, एंट्रोपोस्टीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू एंड लेटरल व्यू। और हम देखते हैं जैसे हमने पहले जाना, सर्वाइकल स्पाइन में 7 वर्टिब्रा होती हैं, डोर्सल स्पाइन में 12 वर्टिब्रा होती हैं, लंबर स्पाइन में 5 वर्टिब्रा होती हैं। यहाँ तक तो वर्टिब्रा, हर वर्टिब्रा अलग अलग है, लेकिन जो सैक्रम है उसमें सैक्रम और कॉक्सिक्स, उसमें जो बोन्स हैं वो आपस में यूनाइटेड होती हैं। तो ये राइट साइड पे डायग्राम दिखाया गया है शोइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ spinal cord, spine, and it is also showing bodies, intervertebral disc, facet joints, spine and transverse processes। Now ये एक ट्रांसवर्स डायग्राम है और इसके बीच में जो वाइट स्पेस है ये स्पाइनल कॉर्ड है और चारों तरफ इसके स्पाइन के मसल्स दिखाई दे रही हैं। Now how do we classify injuries? There are two ways of classifying
स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, होल्ड्सवर्थ 2 column theory और डेनिस 3 column theory. Now anterior, we divide the spine into anterior column, middle column and posterior column. Now इसको करने के दो तरीके हैं, होल्ड्सवर्थ एंड डेनिस. Now traumatic injuries of vertebral and neural tissues due to corresponding pulling or shearing forces. Now most common locations are cervical and cervical 1 to 2, cervical 4 to 7, 12 thoracic vertebra and second lumbar vertebra. These are the most common locations of spinal cord injury. Locations reflect most mobile portions of vertebral column and the locations where spinal cord occupations occupies most the vertebral canal. इस डायग्राम में भी स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट पोर्शंस बताए गए हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड, देन वर्टिब्रल डिस्क, बोन एटसेट्रा. Now vertebral injury can occur due to fracture, dislocation or both. Now within minutes after injury, hemorrhages appear in the central gray matter, paya and arachnoid matter. ये तीनों लेयर्स जो हैं ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करते हैं. Vertebral injuries can occur due to fractures, dislocations or both. Within minutes after injury, hemorrhages appear in the central gray matter, paya and arachnoid. ये तीनों लेयर्स को meninges बोलते हैं हम. arachnoid matter, paya matter, और इनको हम और ड्यूरा मैटर, इन तीनों लेयर्स को, टिश्यूज को हम meninges बोलते हैं. लोकल हेमरेजेस रिड्यूस वास्कुलर परफ्यूजन. और meninges एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड का, नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड का. और अच्छा, तो मतलब meninges जैसे कपड़े पहनते हैं ना हम, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर 3 लेयर्स होती हैं टिश्यूज की. सबसे बाहर वाली लेयर को ड्यूरा मैटर बोलते हैं, और जो सेकेंड लेयर है उसको अरेक्नॉइड मैटर बोलते हैं, और तीसरी लेयर को जो बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड से चिपकी हुई होती है उसको हम पाया मैटर बोलते हैं. तो ये तीनों जो लेयर्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को बाहरी चोटों से या इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं. यानी कि ये जो सेंट्रल ग्रे मैटर्स है, पाया मैटर्स है, और ये एरेक्नोइड है, ये जो है बाहर इसके जो अटैक से, मतलब स्पाइनल कॉर्ड को बचाती है, इंजरी से बचाती है. तो व्यूअर्स, इस तरीके से हमने जाना कि स्पाइन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या है और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है. इसके साथ ही इसकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं, इन सब के बारे में हमने आज के अभी के सेशन में हमने जानकारी ली. बाकी का टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं
बस तुझे देख कर with her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू आ मेरी आँखों का तारा है तू She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि व्यूवर्स, अगर आपकी इस रिगार्ड में कोई सजेशन है या आपकी कोई क्वेरीज़ हैं जो कि आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारी टोल फ्री नंबर पर। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008। हमारा लैंडलाइन नंबर है 26511611 और हमारा फैक्स नंबर है 26511609। तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए और शेयर कीजिए अपने व्यूज़ हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। तो ब्रेक में जाने से पहले जैसा कि हमने जाना था कि स्पाइन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है। बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो स्पाइंस के बीच में होती है, स्पाइंस रिंग्स के फॉर्म में होती हैं और जिनके बीच में स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। और उसके अलावा हमने जाना कि स्पाइनल कॉर्ड के कॉजेज़ क्या होते हैं, जैसे कि ऊंचाई से गिर जाने की वजह से, या फिर कोई फ्रैक्चर हुआ है, या कोई जो वायलेंस हुआ है, किसी के ऊपर कोई हमला हुआ है, तो उसकी वजह से भी नर्व कैनाल से डिस्कनेक्ट हो जाने की वजह से बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ ही साथ हमने जाना